Hi everybody, this is Savitri of GMA classes. I'm going to explain Ncert class 10 mathematics. In my previous video, I had explained to you exercise 4.3 of quadratic equation, the last exercise of quadratic equation. Now, here I'm going to explain to you today the arithmetic progression. What is arithmetic progression? Chapter 5, Arithmetic progression. It deals with a series of numbers. That is, some numbers are arranged in a definite order according to some rules. That is called a sequence. Like, first let us see what is a sequence. Sequence is a series of numbers arranged in a particular order, in a particular or special order according to some rules. This is called a sequence. For example, 1, 3, 5, 7, 9, etc. These are a series of numbers or sequence. This has been arranged in a special way according to some order. Another example, you can write 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, etc. Now, such a sequence of numbers, where here we are getting the second number or the successive number, we get such a series of numbers or such a sequence of numbers where we get the successive term by adding a particular number to the previous term. For example, let's take the same example, or I'll take another example. Let's take 3. Then I am taking 4. So this is the succeeding number, this is the preceding number. So with the preceding number, I added 1 to get 4. Now if I add 1 to the second number, I'll get the third number. With the third number, I am adding 1, then I am getting the fourth number, like this. That is, the succeeding terms will be obtained by adding a particular number to the previous term. Such a sequence is called arithmetic progression. Arithmetic progression, or in short, we call it AP. Arithmetic progression, or in short, we call it AP. Okay. Now, here each of these numbers is called a term. Term of the sequence. Term of the sequence or term of the arithmetic progression. Now, these are called, this is the first term, second term, third term, fourth term, fifth term, etc. Now, I told you each number is obtained by adding something to the first term. So that number that we are adding can be 0, can be positive and can be negative. It's not necessary that I always have to add 1 to get the next number. It can be 0 also. Now, for example, if I take 4, if I add 0, second number also I'll get 4. Again, if I add 0, third number also I'll get 4. Fourth number also I'll get 4. Like this it will go. So here I have added 0 to each number to get the succeeding number. Now, the number that we add, the number that we add
to the preceding number is the difference, we say. Difference of these two. Like for example, if I take 7, if I take 9 as the second number, 11 as the third number. Now you know that why I have added 2 to 7 to get the 9. Then again I have added 2 to 9 to get 11. Here, what is the difference here? The difference here is 9 minus 7, that's equal to 2. The difference between the first and second term is 2. Then third and second term is also 2. Now if I take the fourth term, fourth and third term is also 2. So this way, sorry, each number is obtained by adding a particular number to the previous number. This is called common difference. This is called common difference of the arithmetic progression. This is always represented by small letter d. Now, the first term, the general formula or general form, the general form of an AP is A, where A is the first term, A plus D. Then one more D I am adding to this, so A plus 2D, A plus 3D, etc. This is the general form of an arithmetic progression. So, let me repeat, arithmetic progression, that is AP in short, is a series of numbers or is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the previous term. I will get second term by adding D, the common difference, to A, the first term. Third time I will get by adding the same number to the second term. And fourth number I will get by adding the same number to the third term, etc. Like this you can go on making the series. So AP is a list of numbers, is a list of numbers where it is adhering to a particular order. Okay. Now, as I told you, the first term, A is the first term here. First term is A. The common difference is D. Now, let me give you an example like 1, 2, 5, 7, 11. There is a series like this. Can this be called as an AP or arithmetic progression? Let's see. See, 2 minus 1, that is second term minus the first term. Difference is second term minus first term. That is 2 minus 1, that's equal to 1 here. This is D1. Now, in this what is D2? Third term minus the second term. Here I am getting 3. Now if I take another difference, 7 minus 5, that's equal to 2. See here, the difference here is all different. They are not common difference. So, this series is not an AP or arithmetic progression because
it has to be the common difference. The difference has to be the same everywhere. That is why then only it will be called an arithmetic progression or AP. Here these are also series of numbers only, but they are not following a certain rules. It's coming as it goes. So this is about arithmetic progression now. Now let's move on to exercise 5.1 here. The first 5.1, if you do it, the first term and the common difference and the concept of arithmetic progression, everything will be clear in the first exercise. The first exercise, question number 1 is, in each of the following situations, does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? So they have given a statement. Using that statement, we have to write the numbers, and we have to find out whether they follow or whether they make an arithmetic progression or not. The first part of the first question is, the taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometers. That is, for the first kilometers it is 15 rupees. Then if it goes one more kilometer, the charge will be 15 plus 8. This 15 definitely you have to give. Then another, this is equal to 23. It will come 23. Now if you go one more kilometer, this 23 plus 8, that's equal to 31. If you go one more kilometer, 31 rupees plus 8 rupees, that's equal to 39 rupees, etc. It goes on. As many kilometers as you go, you have to keep on adding 8 rupees, because 8 rupees is the charge for the additional kilometer. So this number becomes 15. The series becomes 15, 23, 31, 39, etc. Now check here. Everywhere the difference is 8, because for every kilometer we are giving 8 rupees extra, isn't it? So the difference here, difference of each number of the series is the same. Therefore, it is an AP, or this forms an AP. Did you understand? Now, the second part of the first question. The second part of the first question is, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at each time. Okay, let's take the amount of air in the beginning be 1. Now, 1/4 of this 1 has been removed. So बचा हुआ कितना एयर है उसमें 3/4, यानी 1 में से 1/4 गया. 1 minus 1/4 is 3/4. अब उसके बाद क्या होता है, 3/4 का भी थर्ड क्या होगा, 1/4 ऑफ 3/4. बचा हुआ एयर जो है उसका 1/4. इट इज नॉट 1/4 ऑफ द फर्स्ट टर्म. बचा हुआ एयर जो है उसका 1/4. दिस इज इक्वल टू 3/16. सो एक्सेट्रा इट गोस. अभी अगला क्या होगा, 3/16 का भी 1/4. हियर there is no common difference. There is no common difference.
सो कॉमन डिफरेंस है या ईच टर्म के बीच में अगर डिफरेंस सेम है तो ही वो AP बना. सो दिस स्टेटमेंट और दिस सिचुएशन is not forming an AP. This is not forming an AP. Arithmetic progression form नहीं करता क्योंकि अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं इसमें. Now the third part, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter. So that means 150 is the cost for the first meter and rises by 50 rupees for every subsequent meters. तो 150 के बाद अगला एक मीटर और डिग करने के लिए you have to pay 50 rupees extra. That means 150 भी देना है, 50 भी देना है, that's equal to 200. ये हो गया सेकेंड. अब एक और मीटर डिग करने के लिए ये 200 के साथ एक और 50 देना है, दैट्स इक्वल टू 250. अब एक और मीटर डिग करने के लिए 250 के साथ एक और 50 रुपीज़ देना है, दैट्स इक्वल टू 300. देयरफॉर द सीरीज बिकम्स 150, 200, 250, 300, 350, etc. It will go. See here, it follows a proper pattern. 50, 50, 50 rupees ऐड करने से हमको अगला टर्म मिल रहा है. Therefore, this forms an AP. Okay, there is a common difference of 50 here. Now the fourth part of this is the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the at compound interest at 8% per annum. तो पहला बैंक में सबसे पहले 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया. नाउ सेकेंड ईयर में क्या होगा, 10,000 रुपीज़ भी मिलेगा प्लस इसका 8% भी मिलेगा, क्योंकि 8% है ना, यस 8% इंटरेस्ट भी मिलेगा. अब ये हो गया आपको 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000, सॉरी ये कट गया. So this is equal to 10,000 plus 800 is equal to 10,800. अब थर्ड ईयर में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा. सो ये 800 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, सो अमाउंट बिकेम 10,800. अब थर्ड ईयर में क्या होगा, ये 10,800 भी मिलेगा, देन 8% ऑफ 10,800. तो ये क्या हो गया, ये दोनों कट गया. दिस इज इक्वल टू 10,800 प्लस 8 8s are 64, 8 1s are 8. That is 4, 6, 8 plus 8, 16, carry 1, 11. 11,666. So कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ऐड होते जाता है, isn't it? इसलिए इसमें डिफरेंस जो है, therefore the सीरीज क्या बन रहा है, 10,000, फिर 10,800, फिर आ रहा है 11,664, एक्सेट्रा. इट विल गो ऑन लाइक दैट. अब नेक्स्ट ईयर में 11,664 का भी 8% ऐड होगा. सो हियर दिस डजंट फॉलो अ पर्टिकुलर रूल, और द डिफरेंस हियर इज नॉट
the same. Therefore, this is not forming an AP. This is not forming arithmetic progression. समझ में आ गया सबको? अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में जो भी डिफरेंस है वही होना चाहिए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के डिफरेंस, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में भी वही डिफरेंस आना चाहिए. देन ओनली यू कैन कॉल इट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो हमको इसमें फर्स्ट और थर्ड हमको यस दे फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिला. सेकेंड और फोर्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं फॉर्म कर रहा है. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? नाउ आई विल कम टू क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term is A and the common difference is D are given below. So फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट किया है, कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट किया है. अब उन्होंने खुद ही बताया कि ये AP है, इसलिए हमको पहला 4 टर्म्स लिखना है. फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है उन्होंने 10 और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है 10. उसका मतलब क्या है, हमको ये कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है बस. सो फर्स्ट टर्म हो गया 10, सेकेंड टर्म क्या हो गया 10 + 10 20, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 20 + 10 30, फोर्थ टर्म हो जाएगा 30 + 10 40. यानी फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा. तो हमको इस सीरीज को ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उन्होंने हमको अभी बोला है फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने को. आई हैव रिटन द फर्स्ट 4 टर्म. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, A दिया है -2 और D दिया है 0. याद रखना मैंने पहले भी बताया था, कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इसमें उन्होंने दिया है 0. दैट मीन्स हमारा सीरीज क्या होगा, AP विल बी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP क्या होगा, पहला टर्म है 2, 2 के साथ -2 के साथ 0 ऐड करेंगे तब भी -2, फिर -2, फिर -2, ऐसा AP ऐसा एक्सटेंड होते जाएगा क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है. नाउ थर्ड पार्ट में क्या है, A = 4, D = -3 बताया. अगेन लेट मी रिपीट, द कॉमन डिफरेंस जो है 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. इसमें नेगेटिव आया है तो हमारा फर्स्ट टर्म तो हो गया 4. सेकेंड टर्म में क्या होगा, ये 4 के साथ ऐड करना है -3 को, है ना. सो 4 + -3 इज -3. 4 - 3 इज 1. तो ये हो गया सेकेंड टर्म. अब थर्ड टर्म क्या आएगा, सेकेंड टर्म के साथ +(-3), ये कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना. सो दिस विल बिकम -2. अब फोर्थ टर्म के लिए क्या आएगा, -2 के साथ -3 को ऐड करना है, -3, तो क्या मिलेगा -5. सो हमारा सीरीज क्या बना, 4 1 -2 -5. तो ये हो गया हमारा 4 टर्म AP. ये हमारा थर्ड का AP है. अब एक बार चेक करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना मिला, 1 - 4 इज -3. देन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -2 -1 -3 हमको जो दिया है, -5 -2.
-5 माइनस ऑफ -2, तो -5 + 2 दैट इज -3, ऐसा इट विल गो ऑन। अब -5 के साथ -3 को ऐड करोगे, नेक्स्ट टर्म मिलेगा, उसके साथ फिर -3 ऐड करेंगे, अगला टर्म मिल जाएगा। लेकिन हमको अभी बताया है कि 4 टर्म्स लिखने के लिए, तो लिख दिया। अब फोर्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, ए दिया है -1, डी दिया है 1/2, तो हमारा ए पी क्या हो जाएगा, -1 तो पहला टर्म रहेगा ही, -1 के साथ हाफ ऐड करेंगे, 1/2 ऐड करेंगे, तो हमको मिलेगा -½ -½ के साथ फिर ये ऐड होगा हाफ, -½ + ½ विल बी 0, 0 के साथ फिर हाफ ऐड हो जाएगा, तो हाफ। सो हमारा ए पी बन गया -1 -½ 0 ½ क्यों, -1 + ½ कितना होता है, -½ होता है, -½ + ½ 0, 0 + ½ ½। So this way you got the first 4 terms of the AP. अब आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, A is equal to -1.25, D is equal to -0.25, इसलिए हमको इसमें AP क्या होगा, पहला टर्म तो वही रहेगा -1.25, सेकेंड टर्म में क्या आएगा, उसके साथ ये ऐड करना है, तो -1/2 -1.25 प्लस ऑफ -0.25। ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग को दिखाना नहीं है, बट यू कैन इवन डू इट इन द रफ कॉपी, आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। सो -1.25 प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, सो -1.25 -0.25 विल बी इक्वल टू -1.50, तो सेकेंड टर्म हो गया 1.50। अब थर्ड टर्म क्या होगा, -1.50 के साथ आपको ऐड करना है -0.25, तो क्या मिलेगा, -1.75। देन फोर्थ टर्म के लिए -1.75 -0.25 विल बी -2, तो हमारा AP हो गया -1.25। सो आंसर क्या हो गया हमारा, -1.25 -1.50 -1.75 -2 एक्सेट्रा इट विल गो। हमको पहला 4 टर्म्स लिखना है, हमने 4 टर्म्स लिख दिया। सबको समझ में आएगा, इट्स वेरी सिंपल। पहले टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, थर्ड टर्म मिलेगा, लाइक दैट। एंड ये चीज़ याद रखना है, कॉमन डिफरेंस जो है 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ गया, हम सबके हिसाब से एग्जाम्पल कर लिया है इधर। नाउ कम्स क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या है, फॉर द फॉलोइंग APs, यानी उन्होंने खुद बताया कि जो नीचे दिए हैं सब AP है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, वेरी सिंपल। थर्ड में 1 क्या है, 3 1 -1 -3 etc. This dot shows that etc. The series goes on and on like this. इसमें A तो पक्का है, हमको सबको पता है 3 है, यानी पहला टर्म। हमको A भी लिखना है, फर्स्ट टर्म भी लिखना है, कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। अब कॉमन डिफरेंस के लिए हम इसे करते हैं, इधर एक रफ कॉलम बना लेते हैं ताकि हमको ये कर सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, -2 हो गया। लेकिन इमीडिएटली D = -2 नहीं लिखना, क्योंकि वो हमको चेक करना है
ये डिफरेंस तो मिल गया -2. अभी आगे भी वो ही आ रहा है कि दैट वी हैव टू फाइंड आउट. आगे भी -2 ही आना चाहिए. देन ओनली वी कैन मेक श्योर दैट इट इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड दैट इज एन AP. सो नेक्स्ट होगा third term minus the second term, that is -1 -1, that's again -2. Yes, here also we got the difference of -2, here also we got the difference of -2. Now we can make sure that D is equal to -2. So instead of checking only one, don't make sure that it is -2, try one more. Second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term. If all of them are equal, then D is that number -2. Then comes the second part, -5, -1, 3, 7, etc. This is the AP given. So what is A here? For sure it is first term -5. तो फर्स्ट टर्म लिखने के लिए हमको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं. वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द AP एंड राइट इट. अब कॉमन डिफरेंस के लिए लेट अस ट्राई. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना. सो -1 में से माइनस करना है -5 को. सो -1 माइनस ऑफ माइनस इज +5, तो आ जाएगा हमको 4. अब एक और चेक करते हैं. थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं. थर्ड टर्म इज 3, माइनस करते हैं -1 को. सो दिस बिकम्स 3 + 1 दैट्स इक्वल टू 4. सो दोनों जगह हमको सेम डिफरेंस आ गया. नाउ वी कैन मेक श्योर दैट द कॉमन डिफरेंस इज 4. This is how you have to find out. Now the third part, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, etc. Here, as in the other questions, first term is very simple. You just have to observe and write. अब डिफरेंस के लिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा देखने के लिए हम दो तो चेक कर लेते कम से कम. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/3 माइनस 1/3, तो इसको होगा 3 LCM हो गया. 5 - 1 दैट्स इक्वल टू 4/3 हो गया. थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं. 9/3 में से 5/3 को माइनस करते हैं. अगेन LCM इज 3, 9 - 5 is 4. सो हमको दोनों जगह पर 4/3 मिल गया. सो द डिफरेंस इज 4/3. कॉमन डिफरेंस इज 4/3. नाउ द फोर्थ पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, etc. is the AP given. So A is equal to 0.6 फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब कॉमन डिफरेंस के लिए हमको सिर्फ इसको फर्स्ट टर्म को सेकंड में से माइनस करना है, हमको D मिल जाएगा. फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए हम थर्ड में से भी सेकंड को माइनस करके देखते हैं सेम आ रहा है या नहीं. तो आएगा डेफिनेटली. फिर भी एक बार चेक करते हैं. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1.7 माइनस 0.6 क्या मिलेगा? 1.1 मिल गया. अब एक बार और चेक करते हैं, यानी इन दोनों में डिफरेंस है 1.1. हमको आगे भी वही डिफरेंस आ रहा है कि वी हैव टू चेक. सो लेट्स ट्राई वन मोर. फ्रॉम द थर्ड टर्म आई एम सब्ट्रैक्टिंग द सेकेंड टर्म. 8 - 7 is 1, 2 - 1 is 1. Again I got 1.1. Therefore, now we can confirm that the common difference is 1.1 here. So, these are the first three questions of the exercise 5.1. I have done it. I am sure it will be clear to you. All of you, please don't forget to like, share and subscribe. And question 4 of this exercise, I'll be doing it in the
next video. And anybody has got any difficulty in any chapter, please feel free to write it in the comment box. I'll definitely solve it for you. Please press the bell icon so that you will get the notification whenever I put the video. Children, that's all for today. First 3 questions of exercise 5.1 I have done. I'll be doing question 4 in the next video. Very quickly I'll be posting the next video and you'll get the notification if you press the bell icon. So please do subscribe. Thank you. Bye bye.